Hello, students, and welcome. So today we're going to dive into Chapter 5 from your social science book, Consumer Rights. But I want you to forget about this as just another chapter. Think of it as a real-life story, a story that every single one of us is a part of. All right, let's just jump right in. Take a look at these newspaper clippings on your screen. Now, these aren't some made-up stories, okay? These are real cases. DU teacher gets Rs 45,000 for flawed phone. Insurance firm to pay 7,000 for theft. Ronin society to compensate harassed owner. In every single one of these cases, consumers were cheated, and they had to fight, really fight, for justice, for their rights. But this brings up a really big question, right? Why does this stuff keep happening over and over again? Why is it so easy for consumers to get cheated in the marketplace? Well, the answer lies in what we can call the market's unfair game. Let's really break down why an ordinary consumer, people like you and me, often find ourselves in a pretty weak spot, at a real disadvantage. Just look at this power imbalance. It's laid out right here. On one side, you've got us, the consumers. We buy things in small amounts, and we're totally scattered, completely unorganized, right? But on the other side, you have the producers, the sellers. There are fewer of them, but man, are they powerful and organized. So naturally, in a setup like this, the consumer is always in the weaker position. So how exactly is this power misused? Well, let's talk about some of the classic unfair trade practices. First up, weighing less than they should. Like when the vegetable vendor gives you 900 grams instead of a full kilo. Or how about adding charges you never saw coming? That sneaky hidden charge on a restaurant bill. Then there's the big one, selling adulterated or just plain defective goods. Think about spices mixed with junk, or a brand new phone that dies on day one. And finally, spreading false info through ads and media, making all these wild claims that just aren't true. And the worst part? When you try to complain about any of this, what's the typical response you get from the seller? If you didn't like what you bought, please go elsewhere. It's like they're saying, hey, once the product is sold, it's not my problem anymore. All the responsibility is on you. And this cartoon, it just perfectly captures that frustration, doesn't it? The customer here is furious because he feels like the company purposely made the product to fall apart just so he'd have to buy a new one. I'm sure many of us have felt that same exact frustration at some point. But when exploitation goes too far, people don't just sit back and take it, they fight back. And that's exactly what happened. Against all this widespread cheating, a voice rose up. A movement began. And we know it today as the consumer movement. So how did this movement actually grow? Let's look at the timeline. It really kicked off in India back in the 1960s, mostly because of huge problems like food shortages, hoarding, and black marketing. By the 1970s, things got more organized. Consumer groups started writing articles and holding exhibitions to spread awareness. And then, a major global step was taken in 1985 when the United Nations itself adopted the UN Guidelines for Consumer Protection. This was a huge deal. So what was the result of all this fighting, all this hard work? Well, look at this. The game changed completely. It wasn't just about protesting on the streets anymore. Because of the movement, organized centers like consumer forums were set up, places where people could actually go and easily file a complaint. This was a massive, massive step forward. All this struggle, this entire movement, it was all paving the way for a huge solution. It was setting the stage for a law that would become a shield, a protective armor for every single consumer in the country. And that historic moment finally arrived in the year 1986. You have to remember this year. It was a complete turning point for every consumer in India. Seriously, mark this down. This is a total exam flash moment. So, in 1986, the Indian government took a landmark step. They passed the Consumer Protection Act, which is popularly known as COPRA. This was the law that completely changed the picture for consumer rights in India for good. Okay, so how did this law actually change the game? Let's get into it. Let's see what power you hold today as a consumer. This was the single biggest change. Before, the whole idea was buyer beware, which basically meant it was the buyer's job to be careful. But after COPRA, that responsibility completely shifted. Now, it's the seller's responsibility to ensure quality. A seller can no longer get away with saying, hey, not my fault. So, after everything we've talked about today, I have one last question for you. The next time you go out to buy something, are you just going to be a customer? Or are you going to be an aware consumer? Someone who not only knows their rights, but also knows how to use them. Really think about that.
Okay, students, चलो let's dive into this really important chapter on consumer rights. जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई सर्विस यूज करते हैं, you're not just a customer, you're a consumer और आपके पास कुछ स्पेसिफिक राइट्स हैं. बट ये राइट्स हैं क्या और ये कितने पावरफुल हैं? चलो आज इसी पावर को ब्रेक डाउन करते हैं. टू अंडरस्टैंड कि ये राइट्स इतने ज़रूरी क्यों हैं, लेट्स स्टार्ट विद अ रियल लाइफ स्टोरी. ये कहानी है रेजी मैथ्यू की, एक हेल्दी क्लास 9 का स्टूडेंट जो एक सिंपल रूटीन टॉन्सिल रिमूवल के लिए हॉस्पिटल गया था. जो एक छोटा सा प्रोसीजर होना चाहिए था, वो गलत एनेस्थीसिया की वजह से एक भयानक हादसे में बदल गया और उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई. जस्ट थिंक अबाउट इट, एक सिंपल सी सर्जरी और इतना डेवेस्टेटिंग रिजल्ट. ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस था. एक लंबी लीगल लड़ाई के बाद रेजी की फैमिली ने जस्टिस के लिए फाइट किया और उनकी यही फाइट हमारे सबसे पहले कंज्यूमर राइट को हाईलाइट करती. रेजी की स्टोरी एक आईना है जो दिखाता है कि क्या होता है जब एक फंडामेंटल प्रॉमिस तोड़ा जाता है. और यही हमें लेके आता है हमारे पहले और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर राइट पर, द राइट टू सेफ्टी. इसका मतलब ये है कि चाहे आप एक प्रेशर कुकर जैसा प्रोडक्ट खरीद रहे हो या मेडिकल ट्रीटमेंट जैसी सर्विस ले रहे हो, प्रोवाइडर की ये लीगल जिम्मेदारी है कि वो आपकी सेफ्टी इंश्योर करें. उन्हें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करना ही पड़ेगा ताकि आपको कोई नुकसान ना हो. नाउ हियर्स द क्रूशियल पार्ट. देखो, सेफ्टी रूल्स तो हैं, बट उन्हें हमेशा अच्छे से एनफोर्स नहीं किया जाता. सुपरविजन कमज़ोर होने की वजह से कई बार अनसेफ प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाते हैं और इसीलिए हमारी कंज्यूमर अवेयरनेस ही हमारा पहला लाइन ऑफ डिफेंस है. सेफ्टी तो एक बात है, पर तब क्या होता है जब प्रॉब्लम फॉल्टी प्रोडक्ट की नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन की कमी की हो? चलो एक और केस देखते हैं जो हमारे अगले राइट को समझाता है. ये है अमृता, एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जिन्होंने एक गवर्नमेंट पोजीशन के लिए इंटरव्यू दिया. इंटरव्यू के बाद उन्हें कुछ नहीं पता चला, ना कोई रिजल्ट, ना कोई अपडेट. शी वॉज जस्ट लेफ्ट वेटिंग, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जो उन्हें जानने का पूरा हक था. अमृता की सिचुएशन बिल्कुल परफेक्टली हमारे दूसरे राइट को इलस्ट्रेट करती है, द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. ये राइट हर चीज़ पे अप्लाई होता है. जो प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं जिन पर MRP, एक्सपायरी रेट जैसी डिटेल्स होनी ही चाहिए, से लेकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के एक्शंस तक. और इसे इंडिया में सपोर्ट करता है पावरफुल राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी RTI, जो 2005 में पास हुआ था. तो फिर क्या हुआ? अमृता ने एक RTI फाइल की. इससे उन्हें ना सिर्फ डिले का रीज़न पता चला, बल्कि उन्हें अपना अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया. क्यों? क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया था. देखा, यही है इन्फॉर्मेशन की पावर. अब लेट्स टॉक अबाउट अ कॉमन सिचुएशन. क्या आपको कभी कहा गया है कि आपको एक चीज़ खरीदने के लिए दूसरी चीज़ भी लेनी पड़ेगी? फॉर एग्जाम्पल, एक दुकानदार कहता है कि टूथपेस्ट तभी मिलेगा जब आप टूथब्रश भी खरीदोगे. इज दैट फेयर? जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जवाब है एक क्लियर नो. कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप वो प्रोडक्ट खरीदो जो आपको नहीं चाहिए. अगर आपको सिर्फ टूथपेस्ट चाहिए तो आप सिर्फ टूथपेस्ट ही खरीदोगे. दिस इज योर राइट टू चूज. एक स्टूडेंट अभिरामी ने बिल्कुल यही राइट यूज़ किया. उसने 2 साल के कोचिंग कोर्स के लिए फीस दी थी, पर क्वालिटी से सेटिस्फाई ना होने की वजह से उसने 1 साल बाद ही छोड़ने का फैसला किया. इंस्टीट्यूट ने दूसरे साल की फीस रिफंड करने से मना कर दिया, बट कंज्यूमर कोर्ट ने उसके फेवर में फैसला सुनाया क्योंकि उसके पास सर्विस डिसकंटिन्यू करने का पूरा हक था. तो क्या होता है अगर आपके राइट्स को मना कर दिया जाए? अगर किसी सेलर या सर्विस प्रोवाइडर ने आपके साथ गलत किया है, तो आप जस्टिस के लिए कहाँ जाओगे? चलो प्रकाश की जर्नी को फॉलो करते हैं, जो पूरा प्रोसेस बताती है. उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए मनी ऑर्डर भेजा, पर वो कभी पहुंचा ही नहीं. पोस्ट ऑफिस से कोई ठीक जवाब न मिलने पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया. और सबसे इम्प्रेसिव पार्ट, उन्होंने अपना केस खुद लड़ा और जीत भी गए. और देखो, ये प्रोसेस आखिर दिखता कैसा है. आपको जस्टिस के लिए महंगे लॉयर्स की ज़रूरत नहीं है. आप एक सिंपल फॉर्म पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और कंज्यूमर फोरम में खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हो. ये सिस्टम आम आदमी के लिए ही बनाया गया है. तो इन सारी पावरफुल स्टोरीज को देखने के बाद में टेक अवे क्या है? ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो इन सारे राइट्स को जोड़ती है? द क्रूशियल पॉइंट इज दिस: आपके कंज्यूमर राइट्स आपके टूल्स हैं, आपके शील्ड हैं, लेकिन ये तभी काम करते हैं जब आपको पता हो कि आपके पास ये हैं और आप उन्हें यूज़ करना जानते हो. आपकी अवेयरनेस ही खुद को प्रोटेक्ट करने का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी स्टेप है.
तो इस बारे में सोचो, अगली बार जब आप कुछ खरीदोगे तो क्या आप लेबल को थोड़ा और ध्यान से देखोगे? अगर आप किसी सर्विस से खुश नहीं हो तो क्या आप आवाज उठाओगे? अपने राइट्स को जानना एक बात है, उन्हें यूज करना दूसरी, और वही आपकी असली पावर है। दैट्स व्हाट बीइंग एन अवेयर कंज्यूमर इज ऑल अबाउट। Hey everyone, and welcome. Today we're going to tackle a super important part of your social science curriculum. And trust me, this is something that affects you, your friends, and your family every single day. We're talking about your rights as a consumer. So let's jump right in. Picture this. You save up your pocket money. You finally buy that new gadget you've been wanting for ages. You get it home, you're super excited, you open the box and nothing. It doesn't work or it's broken. How frustrating is that? We've all been there and it feels like your hard-earned money just went down the drain. So, I have to ask, has this ever happened to you? Maybe with a new pen, a pair of headphones, or maybe you've seen your parents get frustrated with a new appliance. I'm willing to bet a lot of you are nodding your heads right now, because, well, it's a pretty common story. So what do? Do you just sigh and accept that you got a bad product? Absolutely not. There was a huge consumer movement designed to protect you, and it all starts with a very simple, very powerful slogan. Jago, Grahak, Jago. And you know, this idea that the customer is important isn't new at all. Way back, Mahatma Gandhi said that a customer isn't an interruption to our work, they are the purpose of it. He understood that businesses depend on customers, not the other way around. This idea is really the heart of all consumer rights. Taking that powerful idea forward, the Indian government launched this amazing campaign, Jago Grahak Jago. It's literally a wake-up call for every single one of us. It means wake up, consumer, wake up, and know your rights. Now, this whole movement got some serious legal teeth back in 1986. That's when the Indian Parliament passed a game-changing law called the Consumer Protection Act, or COPRA for short. This is the official rulebook that gives you, the consumer, real power in the marketplace. And here's a date for you to remember. The day that COPRA was officially enacted, December 24th, is now celebrated all across India as National Consumers Day. It's a day to remember just how important our rights are. All right, get ready, because under this system, you basically have superpowers and shields. Seriously, your rights are your superpowers, and certain quality marks on products are like your protective shields. Let's gear up and learn what they are. Okay, here are your 6 main superpowers. Let's go through them quickly. Right to safety, the stuff you buy shouldn't hurt you. Right to be informed, you deserve to know everything about a product. Right to choose, nobody can force you to buy one specific brand. Right to be heard, if you have a complaint, someone has to listen. Right to seek redressal, you can get compensation for bad products or services. And the right to consumer education, you have the right to learn about all of this. Now those rights are fantastic when something's already gone wrong. But wouldn't it be better to avoid the problem in the first place? So how do you protect yourself before you even hand over your money? This is where your shields come in. Look for logos like this one, the ISI mark. If you're buying anything electrical or an LPG stove, this little mark is your best friend. It's a guarantee that the product has passed all the necessary safety tests. It's a big deal. And it's not just for electronics. Different products have different shields. If you're buying gold jewelry, you look for the hallmark to be sure of its purity. If you're buying things like spices or cooking oil, you look for the AG mark. These logos are your first line of defense against poor quality. So what are all these logos, really? They're quality certification marks. Think of them like a stamp of approval from an expert organization that checks quality. For you, the consumer, they're a simple, visual shield you can look for. Okay, so let's imagine the worst. You were careful, you checked everything, but you still ended up with a faulty product, and the seller won't help. Now what? Well, you don't have to argue. You can start climbing the ladder to justice. COPRA set up this really smart 3-level system. For most everyday claims, up to 1 crore rupees, you start at the first step, the district commission. If the claim is bigger, between 1 and 10 crores rupees, you go to the state commission. And for really huge claims, over 10 crores rupees, you go straight to the top, the National Commission. It's all laid out very clearly. And here is the absolute best part. If for some reason your case is dismissed at one level, it is not the end of the road. You have the right to appeal to the next level up. So you can go from the district to the state or from the state to the National Commission. The system is designed to give you a fair shot at justice. All this theory is great, but let's see how it works in the real world. I want to tell you about Arita's story,
because it shows exactly how you can use this system to win. So, Arita bought a simple wall clock, but it turned out to be defective. She went back to the shop, she complained to their office, but nobody helped her. Sounds familiar, right? But Arita didn't give up. She took her superpowers and filed a case in the District Consumer Commission. And guess what? She won. The commission ordered the dealer to replace the clock. A regular person got justice because she knew her rights. At the end of the day, we can have all the laws, all the commissions, and all the logos in the world, but none of it works unless consumers like you are aware and willing to act. The real power behind this whole movement is you. So here are a few final tips to be a super alert consumer. Number 1, always get a bill. It's your most important proof. Number 2, be patient. Sometimes these cases take time. And very important for all of you who shop online, the law was updated in 2019, and now all of your online purchases are protected under COPRA 2. If you remember just one thing from all of this, let it be this simple mantra: an alert consumer is a safe consumer. All of you are the next generation. You are the future of this consumer movement. So the big question isn't just about what's in your textbook. It's about how you're going to use this knowledge in your life to protect yourself and your family. What will you do with your new superpowers? Think about it. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो हम सबकी डेली लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बीइंग अ कंज्यूमर। हम रोज कुछ ना कुछ खरीदते हैं, राइट? पर एज अ कंज्यूमर क्या हम सच में अवेयर हैं? चलिए आज एक छोटा सा टेस्ट करते हैं कुछ सिंपल सवालों से। रेडी हो? अच्छा, एकदम सच बताना, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप शॉपिंग करके घर आए और लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई? मतलब या तो आपसे ज्यादा पैसे ले लिए या जो सामान लाए वो आते ही खराब निकला। होता है ना? इट्स अ सुपर कॉमन फीलिंग और ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, ट्रस्ट मी। तो चलिए आज टाइम है आपका कंज्यूमर आईक्यू चेक करने का। हम एक छोटी सी फन एक्टिविटी करने वाले हैं। इसका नाम है द कंज्यूमर अवेयरनेस चैलेंज। इससे देखते हैं कि आप कितने जागरूक यानी कितने अवेयर कंज्यूमर हैं। मजा आएगा? ओके, सो रूल्स बहुत ही सिंपल हैं। मैं आपसे 5 सवाल पूछने वाला हूं। आपको बस अपने मन में सोचना है कि आपका आंसर क्या है। ऑलवेज यानी हमेशा, समटाइम्स यानी कभी कभी, या फिर नेवर बिल्कुल नहीं। बस अपने आप से एकदम ऑनेस्ट रहना है, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, जब आप कुछ भी खरीदते हैं, चाहे वो छोटी सी चीज हो या कोई बड़ी चीज, क्या आप बिल मांगते हैं? हमेशा? सोचो, क्योंकि याद रखो वो जो छोटा सा कागज का टुकड़ा होता है ना, वो ही आपका सबसे बड़ा प्रूफ है। उसके बिना अगर प्रोडक्ट खराब निकला तो कंप्लेन करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, जब आप कोई पैक्ड सामान लेते हो तो क्या आप उस पर क्वालिटी मार्क्स चेक करते हो? जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पर होता है ISI मार्क, या खाने की चीजों पर एग मार्क, और सबसे जरूरी एक्सपायरी डेट देखते हो? ये मार्क्स ना आपसे एक प्रॉमिस है क्वालिटी और सेफ्टी का, और एक्सपायरी डेट चेक करना, भाई वो तो आदत बन जानी चाहिए। ऑलराइट, अगला सवाल, सोचो आप सब्जी मंडी में हो और आप देखते हो कि सब्जी वाला स्टैंडर्ड वेट्स की जगह ना पत्थर यूज कर रहा है तौलने के लिए, तो आप क्या करोगे? क्या आप उससे टोकोगे? कुछ बोलोगे? यार चुप रहना मतलब गलत चीज को इनडायरेक्टली सपोर्ट करना ही हुआ, है ना? अच्छा, ये वाला सवाल थोड़ा ट्रिकी है, आराम से सोचना। क्या आपको ये पूरा विश्वास है कि आपका जो रेगुलर दुकान वाला है, जिससे आप हमेशा सामान लेते हो, वो आपसे कभी चीटिंग नहीं करेगा? देखो, ट्रस्ट करना अच्छी बात है, बट ब्लाइंड ट्रस्ट नॉट सो गुड। एक स्मार्ट कंज्यूमर हमेशा थोड़ा सा अलर्ट रहता है, चाहे कोई भी। और ये रहा आखिरी सवाल, ये तो आप सबसे बहुत रिलेट करेगा। जब आप ऑटो रिक्शा में ट्रैवल करते हो तो क्या आप हमेशा मीटर से चलो बोलते हो, या ऑटो वाले ने जो बोल दिया बस दे दिया? याद रखो, मीटर से पे करना भी आपका एक राइट है एज अ कंज्यूमर। तो चैलेंज खत्म? कैसा गया? क्या सोचा आपने अपने मन में? चलो अब टाइम है स्कोर चेक करने का। लेट्स सी, आप एक सुपर अवेयर कंज्यूमर हो या अभी थोड़ा और सीखने की जरूरत है? ओके, सो अगर आपका जवाब बिल मांगने के लिए ऑलवेज था, क्वालिटी मार्क्स चेक करने के लिए ऑलवेज था, गलत वेट्स को ऑब्जेक्ट करने के लिए ऑलवेज था, और ऑटो में मीटर से पे करने के लिए भी ऑलवेज था, और सबसे इम्पॉर्टेंट दुकान वाले पे ब्लाइंड ट्रस्ट के लिए नेवर था, तो फिर बहुत बहुत बधाई, आप एक एक्सट्रीमली अवेयर कंज्यूमर हैं। सीरियसली वेल डन। और अगर आपके ज्यादातर आंसर्स समटाइम्स या नेवर में आए, या आपने कहा कि हाँ आप अपने शॉपकीपर पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो, तो
कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सीरियसली। इसको एक वेकअप कॉल समझो। इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए, बिल्कुल नहीं। बस इसका मतलब है कि अब सेम चीज़ों का थोड़ा और ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, राइट? लेकिन ये जो छोटा सा क्विज हमने किया ना, ये सिर्फ एक गेम नहीं था। ये एक झलक थी, एक विंडो, एक ऐसी चीज़ की तरफ जो इससे बहुत बड़ी है। अब हम देखेंगे कि ये जो डेली हैबिट्स हैं, ये आपके एक्चुअल राइट से कैसे जुड़ती हैं और रियल लाइफ में इतना अवेयर होना इतना ज़रूरी आखिर है क्यों? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, एक जागरूक कंज्यूमर बनना ये सिर्फ आपकी सोशल साइंस की किताब का एक चैप्टर नहीं है। ये आपकी पावर है, आपकी ताकत है मार्केट में। जब आप एक बिल मांगते हो या गलत वेट्स पर आवाज़ उठाते हो, तो आप सिर्फ अपने पैसे नहीं बचा रहे, आप पूरे सिस्टम को आईना दिखा रहे हो, उसे अकाउंटेबल बना रहे हो। आप एक साफ सिग्नल दे रहे हो कि भाई क्वालिटी और ईमानदारी मैटर करती है। दैट इज़ द रियल पावर ऑफ एन अवेयर कंज्यूमर। तो अब इस एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपके लिए बस एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। आज हमने इतनी बातें की, इसके बाद ऐसी कौन सी एक चीज़ है, सिर्फ एक, जो आप आपसे अगली बार शॉपिंग करते वक्त अलग करोगे, डिफरेंट करोगे? इसके बारे में ज़रूर सोचना, क्योंकि याद रखना, एक छोटा सा चेंज ही एक बड़ी अवेयरनेस की शुरुआत होती है।